हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू कोर्स फॉर क्लैट। क्लैट जैसे कि हम सब जानते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को कहते हैं, जो कि हमारे देश की 26 में से 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो टेस्ट है वो है। सिर्फ NLU दिल्ली अपनी खुद की एंट्रेंस टेस्ट कराती है, जिसको ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET कहते हैं। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और दूसरे लॉ कॉलेजेस भारत में वो भी क्लैट के स्कोर्स लेते हैं। सारे PSUs जैसे ONGC, कोल इंडिया, BHEL, इंडियन आर्मी, ये सब भी क्लैट के स्कोर्स लेते हैं। टेस्ट आप अपनी 12th क्लास के बाद इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ के लिए दे सकते हैं, और फिर जब आप एक बार ग्रेजुएशन इन लॉ कर लें उसके बाद भी आप एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। ये वैसे काफ़ी टफ एग्ज़ाम मानी जाती है, जिसमें एक्सेप्टेंस रेट 3% से भी कम है। क्लैट के स्थापित होने से पहले हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी। क्योंकि हर लॉ यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग एग्ज़ाम कराती थी, तो कई बार इसकी डेट क्लैशेस होती थी आपस में या फिर दूसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ। तो कई सारे बच्चे ये टेस्ट मिस कर देते थे और इस वजह से भारी असंतोष था। इसलिए सब लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया और फिर डिसाइड किया कि हम सब एक साथ ही एक इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम कराएं एडमिशन के लिए। तो ये तो हो गई कि क्लैट की स्थापना क्यों, कैसे हुई और क्लैट क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सिर्फ इंडियन नेशनल्स और NRI ही इस एग्ज़ाम्स में भाग ले सकते हैं। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट किसी LLU में पढ़ना चाहता है तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हर साल क्लैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पब्लिश करता है। तो आइए हम देखते हैं 2024 के क्राइटेरिया। क्लैट 2024 के सिलेबस और फॉर्मेट में एक चेंज हुआ है। क्लैट में अब 150 की जगह 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो ये 2 घंटे की टेस्ट होगी। लेकिन पहले जहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब सिर्फ 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शंस 5 रहेंगे, वही जैसे पुराने थे। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो बाकी सिलेबस में और कोई चेंज नहीं आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज आया है। पोस्ट ग्रेजुएट क्लैट के लिए ना सिलेबस में कोई चेंज है और ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंज है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये वैसे ही होगा। बल्कि स्टूडेंट्स का बर्डन कम करने के लिए 150 की जगह 120 क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो एक बार UG के सिलेबस पर एक चर्चा कर ली जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 घंटे की टेस्ट होगी। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 मार्क ईच होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सो जो 5 सेक्शंस हैं वो हैं इंग्लिश, करंट अफेयर्स जिसमें GK भी आ जाता है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो अगर क्लैट इस साल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता तो एक पैसेज 450 वर्ड के आसपास का एक पैसेज आता है, जो कि कंटेम्प्रेरी या हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट फिक्शन या नॉन फिक्शन से हो सकता है। और एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए 5-7 मिनट में इस पैसेज को पढ़ना बहुत ही इजीली पॉसिबल होना चाहिए। हर पैसेज के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ आपको ये दिखाना होता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज स्किल्स कितने अट्यून्ड हैं। आपको एक पैसेज, यू शुड बी एबल टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट्स दैट आर डिस्कस्ड इन द पैसेज, एज वेल एज एनी आर्ग्यूमेंट or viewpoint that is discussed or set out in the passage. You should also be able to draw inferences and conclusions based on the passage. You should be able to summarize the passage and compare and contrast the different arguments or viewpoints set out in the passage. You also need to understand the meaning of various words and phrases in the passage. So it's overall not that tough, but I would recommend that each and every one of you should start reading at least 2 hours a day, so that you are up to speed, so that you can read 450 words
as fast as possible. And not only should you be able to read it fast, you should also be able to comprehend it fast. So my suggestion at this point of time is start reading 6 months before the exam. We are even more we have even more time now, so we should start from today. We should go out and read 2 hours a day. I'll give you a comprehensive list of reading material that will help you in this endeavor. In the next lectures, we'll go deep into what we need to read and what we need to study for English. Coming up to the next topic, current affairs including general knowledge. In this section, you will be provided with passages, again 450 words each. These passages will be derived from news, journalistic sources and other non-fiction writings. The questions may include an examination of legal information or knowledge discussed in or related to the passage, but would not require any additional knowledge of law beyond the passage. Each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your awareness of various aspects of current affairs and general knowledge. That would include contemporary events of significance, global as well as Indian, news related to art and culture, international affairs, and historical events of continuing significance. So not all history is important. History that is relevant now, so history that has been in news in the last 1 year, would be of particular significance. Moving on, the third part of the exam would be legal reasoning. In this section, you will be expected to read passages, again of 450 words. These passages may relate to facts or situations or scenarios involving legal matters. There may be public policy questions or moral philosophical inquiries. You will not require any knowledge of law, but you will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues. For example, UCC is a hot cake issue right now. So if you have some understanding of what's going on, you would be able to better apply general principles or propositions to the given fact and scenarios. Each of this passage will be followed with questions that will require you to identify and infer the rules and principles set out in the passages. You should apply such rules and principles to various facts and situations and understand how changes to the rules or principle may alter the application to various situations. So this is a very important chapter. If you can understand how rules work, how to apply rules in a legal scenario, you can get great marks out of this section. The next section is logical reasoning. Logical reasoning section in CLAT will include a series of short passages of about 300 words each. Each passage will be followed by one or more questions which will require you to recognize an argument, its premises and conclusions. You will be required to read and identify the arguments set out in the passage. You also need to critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premise or evidence. Infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations. You may also need to draw relationships and analogies to identify contradictions and equivalence and assess the effectiveness of the argument. So this logical reasoning is different from what you will notice in CLAT or other government exams or exams. This is not about syllogisms and all. It would be more on the language side of reasoning. Keep that in mind. The next section would be quantitative techniques. Quantitative techniques in CLAT will include short sets of facts or propositions, graph or other textual, pictorial or dramatical representation of numerical information, followed by a series of questions. You will be required to derive information from such passages, graphs or other representations and apply mathematical operations from such information. So the question may require you to derive, infer and manipulate numerical information out of passages, graphs or other representation.
and you will be required 10th standard mathematical knowledge so that you can apply this information. You may be asked questions related to areas, ratios and proportion, basic algebra, mensuration and statistical estimation. Now, how should you go about preparing for CLAT? So CLAT issues guides to question paper and sample papers. You should go through it thoroughly so that you again understand the minds of the paper setters. There are several model question papers available. Instructional material and exercise for each subject is also provided by the consortium. Once you have successfully completed your application, you will be given access to a learning platform that has this the above mentioned preparatory material, and these exercises are interactive, so you can even check your scores on various exercises and model question paper. In addition, what you should do is you should develop your capacity to read and understand bodies of text. I would like to suggest that you keep abreast with the latest in news and current affairs by reading regularly quality newspapers, periodicals, and improve your speed of answering questions on quantitative techniques by practicing materials such as the 10th standard mathematical textbooks.